if you have talent, you will get promoted and you will have recognition one day. And a lot of work, zari work comes from the Muslims. Lot of wooden work comes from Saharanpur in UP, and various artwork has come. People are painting out there. Okay, so that's the airport. That's the airport. I'm sorry, Mr. Nigam. You can see the Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia accompanying the Prime Minister, the Chief Minister Yogi Adityanath also accompanying the Prime Minister. So there you have it. Officially inaugurated the Valmiki Airport in Ayodhya, the international airport with all the state of art. आज का दिन एक बड़ा मील का पत्थर जब अयोध्या जुड़ चुकी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए समूची दुनिया से। आज तो केवल शुरुआत है, पहले फेज की शुरुआत है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अब ये जो नई शुरुआत है विकास यात्रा की, जिसका पहला फेज, पहला चरण आज राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये सिर्फ शुरुआत है। इसका विस्तार अनंत है और शायद एक नई विकास यात्रा पर भारत को, भारत की आध्यात्मिक चेतना को ये पूरी दुनिया तक लेकर के जाएगा। निश्चित तौर से अजय, हम यहाँ जरूर कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि चलत विमान कोलाहल होए, ये केवल लोगों की संकल्पना में, लोगों की कल्पना में था। वो कल्पना साकार होने की स्थिति है। अब श्री राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा हम जोड़ है यहाँ विमान यहाँ से आवागमन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अश्विनी, आपकी आवाज मिलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हम आपसे संपर्क फिर से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो नया एयरपोर्ट है उत्तर भारत की नागर शैली में बनाया गया है। गुजरात के स्पेशल आर्किटेक्ट टीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अद्भुत संरचना इसकी, 7 शिखरों वाला ये एयरपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। नई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से इसके विस्तार की योजना को अंजाम दिया गया। पहला फेज, दूसरा फेज कैसे 10 गुना बड़ा होगा, इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नई शुरुआत अयोध्या के विकास यात्रा की आज दुनिया से जुड़ चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इतने कम समय में, केवल 20 महीने में, अभी तक का एक रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु भी है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंचतत्व की पूरी अवधारणा इस पूरे टर्मिनल पर आपको दिखाई देती है। अगर शैली की बात करें तो उत्तर भारत की अद्भुत नागर शैली में मंदिर की संरचना में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट के सामने ही पहुंचते ही आपको विशाल तीर धनुष का एक म्यूरल दिखाई देगा, जो पराक्रम का प्रतीक, कर्म का प्रतीक। रघुवंश की परंपरा में, सूर्यवंश की परंपरा में सभी लोग पराक्रमी रहे, सभी लोग कर्म पे विश्वास करते रहे। त्याग और तपस्या जिनके जीवन का हिस्सा था, धनुष बाण उसी पराक्रम का प्रतीक, और उसको एक म्यूरल के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ठीक सामने आप सभी के स्वागत के लिए ये म्यूरल। और नागर शैली में जो पंचतत्व की दैविक पट्टिका है, खंडिका पट्टिका है, द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है, पट्टिकाएं आपको भारत के अतीत में ले जाती हुई दिखाई देंगी। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम बात कर रहे थे कि यह सिर्फ अवसंरचना नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, यह विकास और विरासत को एक साथ साधने की नई कोशिश है। तौर से अजय अगर देखें तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि जब पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए और कहा गया कि चलत विमान कोलाहल होई, वो कल्पना आज फलीभूत हुई है, साकार हुई है। विमानतल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से। अयोध्या धाम आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, विमानन के मानचित्र पर अंकित हो चुका है, जो कि अयोध्या की गरिमा में एक कहीं ना कहीं अयोध्या के किरीट में एक मणिक समान है, एक मुकुट में कहीं ना कहीं एक रत्न के समान है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को, देश भर के श्रद्धालुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एक सुगम आवागमन का साधन तो होगा ही। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के जमाने में छोटी सी हवाई पट्टी बनाई गई थी, जो कि निष्प्रयोज्य हो गई थी, और जहां पर गाय भैंस चरने के अलावा केवल बच्चे खेला कूदा करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे।
Okay, Mr. Nigam, we are just taking the pictures of inside the airport. So the Maharshi Valmiki International Airport inaugurated by the Prime Minister, and we've already put out details of how many passengers and their different phases of development. And look at the kind of pictures and engravings on the walls of the airport. It's essentially a replica of what the Ram Mandir is going to be all about. You know, apart from the politics, apart from the religious aspect of it, the economics of it, the economy of it, that becomes very, very important, doesn't it, Mr. Nigam? Job opportunities in and around the mandir. You're putting Ayodhya on the global map. Yes, go ahead. Yes, Pallavi, in fact, if you look at the ancient history of Indian temples, they were treasuries for businessmen also. They used to keep their money, the traders used to trust them. Whenever they would come, the money would be paid to them, the temples were trustees. Mr. Nigam, I'm sorry to interrupt you. My colleague Siddhant is also on the ground, so I'm just going to go back to him for a quick update. Yes, Siddhant. Yes, Pallavi, so Prime Minister has reached the airport, the new airport building. Right now, he is perhaps taking stock of the interiors that have been done in the airport. In fact, he's being accompanied by Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia and Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath. So it's a historic movement, Pallavi, the airport coming up in Ayodhya, and in fact, Indigo and Air India have already announced flights to Ayodhya from Delhi, Mumbai, Bangalore, and various other destinations. So this is perhaps would give some a huge a level of economic upliftment to the people of airport, because before this there were days, Pallavi, when Ram Bhakt used to come taking bad roads to Ayodhya, to Faizabad in those days. There were bad roads all around Faizabad, and now because of the transformation, because of the efforts, the complete look of Ayodhya has changed, and now Ram Bhakt will be at ease landing at this Ayodhya airport, Maharishi Valmiki International Airport, which is a state-of-the-art international standard airport built in Ayodhya. So it's a historic movement, and it would give a big economic push also to Ayodhya, because it would be easy for people, international travelers, and also people from Delhi, Mumbai, and other metropolitan cities to come to Ayodhya for a day, take darshan, and can fly back. So that is perhaps in mind, and because of which only this airport is today being inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. So a historic day for Ayodhya indeed, with railway station, airport is also being inaugurated, and in fact by 2025 we have been told, Pallavi, that this airport would be equipped to handle big Boeing planes and more of the passenger load coming from various other countries. Right now it's for the domestic fleet, but we could expect by 2025 or 26 international big Boeing Airbuses landing in Ayodhya. So that is perhaps the focus of the government, and the way the work has been completed of this airport in a very quick manner. The airport has been built, and it's a big airport, and in fact Prime Minister also landed today on the same airstrip of the airport. So right now he has returned, and perhaps this is going to be his last engagement, because the stage for his public meeting is right next to this airport premises. So he's going to take that public meeting, where for the first time Prime Minister will talk about the development of Ayodhya, and we could also expect political messaging from Prime Minister. I mean, that is something which everyone is looking at right now, because after such a successful visit to Ayodhya, the kind of love that people of Ayodhya have shown towards him, we could expect him taking pot shots at the opposition parties. I mean, Pallavi, you have been reporting what all is happening, and how there is a huge controversy around the invitation being extended by trust to various political leaders. So we can expect that coming from the Prime Minister. Also, he would mention that what the government in Uttar Pradesh has done and central government has done for the Ayodhya city. Okay. Yeah, I guess the Prime Minister would want to reach out also to the naysayers, pointing out that please don't play around with religion. And when we see these pictures, really, Siddhant, from the airport and from the railway station, the messaging is very clear that there is no contradiction between the two. I'm going to keep coming back to you.